Hi, welcome back. Let's do the next set of functions. These are bads and neutrals. Now I know कि आपके वेरिएंट के अंदर ये वाले फंक्शंस नहीं दे रखे हैं, बट ये आपको ना कभी कभार एग्जाम्स में आते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये फंक्शंस दिखते कैसे हैं, ताकि हम जब चॉइस वाला चैप्टर करें तो हम इनको एक नेक्स्ट स्टेप से शुरू कर पाए. सो हमारे पास बैड्स के तीन कॉम्बिनेशंस हैं. One is x1 is a bad and x2 is a good. Second is x1 is a good, x2 is a bad. And third is x1 is a bad and x2 is also a bad. हमें फिगर आउट करना है तीनों के इंडिकेटिव फंक्शंस कैसे होते हैं. Now for this one, when u is equal to x1 प्लस x2 है. अब x1 के साथ कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर अटैच्ड है तो इसका मतलब x1 जो है वो बैड है ही है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से माइनस x1 प्लस x2, माइनस लॉग x1 प्लस x2, माइनस 1 by minus root x1 plus x2 और any of those things. जैसे ही आपके पास एक माइनस का साइन आ जाता है तब तो आपको वैसे ही पता है ना कि जब x1 आप इंक्रीज करोगे तो उसकी वजह से यूटिलिटी फॉल करेगी. x1 जब आप इंक्रीज करोगे अगर उसकी वजह से यूटिलिटी फॉल करेगी इसका मतलब x1 इज अ बैड. सो ऑल यू हैव टू सी इज यू हैव टू सी व्हेन x1 के इंक्रीज होने से मेरी ओवरऑल यूटिलिटी फॉल कर रही है तो उसको हम बैड बोलते हैं, या फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वन है वो नेगेटिव होती है तो वो बैड होता है, right? And this can happen usually when x1 has a negative value attached to it, whatever the function might be here, or it can happen when you have 1 upon x1 or any other power here, like any other power here plus x2, because in cases में हमारे पास x1 जो है वो bad हो जाता है. जब x1 bad है और x2 good है, when my combination is that x1 is a bad and x2 is a good, then you know आपका जो कर्व बनेगा, जो आपका इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा. अब आपका अगर कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है तो उसके अंदर इट डज नॉट इवन मैटर कि वेदर यू ड्रॉ अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइंस और यू ड्रॉ अपवर्ड स्लोपिंग कॉन्केव आईसीज और यू ड्रॉ अपवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स आईसीज. वो चीजें मैटर ही नहीं करती हैं. व्हाट मैटर्स इज आपने अपना कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बना दिया. आई विल गो अ स्टेप फॉरवर्ड जो मैं चॉइस में करती हूँ आपके साथ, लेकिन मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती हूँ. यू सी, अगर आपके पास कोई कॉम्बिनेशन है बैड एंड अ गुड का, then you will never spend any money on a bad. You will never spend any money on a bad. You will only and only spend money on a good. Obviously, अगर आपको पता है कि आपको एक चीज पसंद ही नहीं है, आप उसको उसके ऊपर spend क्यों करोगे? आप तो वही good लोगे ना जो आपको पसंद है. So you will only ever spend money on a good. आप कभी भी किसी bad के ऊपर तो अपना पैसा spend करोगे ही नहीं. So when you make an upward sloping IC, the idea is to ensure that you know कि आप हमेशा good buy करोगे. तो जब आप उसको बजट लाइन से मैक्सिमाइज करोगे ना उस IC को, तब आपको नेक्स्ट स्टेप पता लगेगा कि हम जब अपवर्ड स्लोपिंग बनाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या बाय करते हैं? गुड बाय करते हैं. दैट्स इट. सिमिलरली अगर हमारे पास x1 जो है वो गुड है और x2 is a bad, then what is going to happen? Then also it's going to be the same thing reversed around. अगर x2 के साथ कोई negative sign है या वो 1 upon में है, anything which makes my marginal utility negative, then x2 is a bad. If x2 is a bad, again I have upward sloping ICs. Now convex, concave don't matter. The only difference is now my arrow is this way, because I want to maximize my consumption of, now my arrows are this way, because I want to maximize my consumption of good one. I want to maximize my consumption of good one because good one is a good. Good two तो bad है ना, तो मैं हमेशा rightward move करूँगी because I want to maximize my consumption of good one, right? What happens when we have a bad and a bad? See, bad and a bad, you know, is a negatively sloping curve. इसका हमने example last video में किया भी था.
तो आपको पता है कि अगर bad and bad is a negatively sloping curve, which means that I will have a downward sloping line. It can be a straight line, it can be a convex, it can be a concave. Which one will it be? Again, you know, for the sake of drawing it, you can figure out the exact shape, which like we did in the last video जब हमने convex and Cobb Douglas करा था. लेकिन actually does not matter. Why doesn't matter? क्योंकि आपका जो point utility maximize करेगा वो हमेशा 0,0 होगा. अगर आपके पास दो bads हैं, then would you spend your money on buying anything? No, because if you do end up buying anything, your utility will be even lesser than if you don't buy anything. अगर आपके पास अभी यूटिलिटी लेट्स से 100 है और अगर आप कुछ खरीदते हो तो बैड है ना, तो डिससैटिस्फैक्शन मिलेगा, तो आपकी यूटिलिटी 100 से कम हो जाएगी. लेकिन अगर अभी आप कुछ नहीं खरीदते हो तो एटलीस्ट 100 पे तो रहोगे. इसीलिए you'd rather throw away your money, you'd rather burn your money or do whatever with your money, but you will never ever spend your money on a bad. इसीलिए जब हम इसको डायग्राम को बनाएंगे भी, whether we make a straight line, convex or concave, we will always be moving inwards, which means this point जो मेरा origin point है, वो point मेरा वो point है जहाँ पे हमारी utility maximize होती है, जहाँ पे हमारी utility maximize होती है. अगर इस point पे मेरी utility maximize होती है तो मैं कुछ भी spend करके कुछ भी नहीं खरीदूंगी. This is how a bad and a bad. How does the utility function of a bad and a bad looks like? Negative x1, negative x2, कोई भी function, या फिर like we spoke about earlier 1 upon under root x1 plus 1 upon under root x2, or it can be any other function like this. You just have to be careful when you start looking at these functions. Now the easy one, neutral, बहुत simple है. Neutral means कि I am neutral towards one of the goods. It doesn't give me satisfaction nor it gives me dissatisfaction. दो cases हो सकते हैं. x1 is a good, x2 is a neutral. In that case, my utility function will be some function of x1. क्योंकि x2 से तो मुझे 0 satisfaction मिल रही है ना. So 0 into x2 is 0. So my utility function is some function of x1. This is my utility function. That's it. मेरा utility function is some function of x1. It can be x1 square, under root x1. It can be anything x1. It doesn't matter because I'm neutral towards good too. So when I draw my ICs will be this way. We've already discussed it in the last chapter, and I will be moving this word. And my function will be some function of x1. Similarly, when x1 is I'm neutral towards x1 and x2 is a good for me, then what happens? My utility function is some function of x2. Same thing. The only thing is it will now be on the y-axis and so on and so forth. Right? So that's it in neutrals and bads. I want to ask you a trick question. It's a very simple one now, but let's suppose that I have a combination of a bad plus a neutral. Can you think of the IC and a utility function which can define this? एक utility function मुझे बताओ और एक IC बताओ which can define this. IC की shape क्या होगी, utility function कैसा होगा, blah blah. Pause the video again, think about it. I will just tell you the answer. ठीक है? This is x1, this is x2. Suppose for me x1 is a bad and neutral के मैं x2 हूँ. So my utility function can be minus x1. So then my ICs will be this only. The only difference is instead of moving outward, now I would be moving inwards because for me, again, this point is the point of highest satisfaction. This point, the point of origin, is the point of highest satisfaction. And my utility function is minus x1, one of the indicator ones. Right? Alright, so this finishes our bads and neutrals. We are still continuing with the chapter. There's lots more to do in this chapter. So I'll see you in the next video for the same. Thank you.